India is home to more than 1 billion dreams, each carrying a dream shaped by the realities around them. Health that reaches in time, learning that sparks possibility, work that restores dignity, a cleaner, safer environment for better life, and also to pass on to the next generation. These are not distant dreams or ambitions. They live in our homes and neighborhood, our classrooms, our streets, amongst the communities, the lives we build together. Since 1956, ONGC has been a part of India's rise. And today, through the ONGC Foundation and its partners, that commitment extends beyond energy. It reaches people, strengthening healthcare, education, the environment, and livelihoods across the country, powering progress not just through resources, but through responsibility. At ONGC, CSR is not just a add-on responsibility, but this is an important vertical of our energy business. We have a yearly CSR budget of around rupees 800 plus crore, and we have almost 1,500 projects which are running every year, which include not only the new projects but also the ongoing projects. Our nationwide presence with various operation areas in various geographies, and this scale we have leveraged in impacting on a sustained basis the lives of people across the country. Our area of focus in the CSR is medical health care, education, environment, livelihood, and also a special focus on Divyangjan. We're trying to make a meaningful change at a scale. That's what our goal is. And we don't want to leave any stone unturned so that community uses its full potential of growth. And that's where our whole effort is lying. And the meaningful change is visible. This commitment is visible on the ground too. Upgraded hospital with better equipment, digital classrooms, students receiving career guidance, and rural families building stable incomes. Each step strengthens communities and gives people a fair chance to move towards a more equal and resilient India. Public healthcare is one of India's deepest needs. To strengthen public health systems, ONGC has supported the upgradation of medical equipment across 122 primary health centers, community health centers, sub-district and district hospitals, and other government facilities in 10 states. At Lady Hardinge Medical College in New Delhi, ONGC has enabled a major enhancement of critical care by installing 15 high-end defibrillators, 16 ICU beds, 12 high-end ventilators, 10 hydraulic patient transfer trolleys, 2 ultrasound machines with TEE probes, and 4 multi-purpose electro-hydraulic operation theatre tables. ONGC's CSR support has significantly strengthened our hospital's critical care infrastructure, allowing the Department of Anesthesia and Critical Care to enhance its capacity for managing high-risk post-operative patients. The addition of beds, ventilators, USG machines and OT tables has made a significant difference, especially for poor patients undergoing major oncological surgeries who depend on our ICU for their safe recovery. ONGC is creating a positive impact through its CSR initiative. One of the initiatives is to improve the health infrastructure in the government sector. ONGC has contributed many linear energy accelerators, which is the state-of-the-art technology in the oncology. ONGC will remain dedicated for improving the health infrastructure, mainly to benefit the local people. These upgrades increase diagnostic accuracy, reduce patient waiting time, decrease external referrals, and help the hospital meet the rising patient load with better preparedness and faster emergency response. मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े अस्पतालों की तरफ से ONGC का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने CSR योजना से हमारा सहयोग किया। आपके सहयोग से
हम गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को गंभीर रोगों का इलाज पूरी तरह मुफ्त दे सकेंगे। ये हमारे सरकारी अस्पताल के मकसद को मजबूत करता है। आपका ये साथ कई मरीजों और उनके परिवारों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। Stronger health gives families hope, and hope grows best where children learn and dream, bringing us to education. ONGC is transforming learning environments in more than 7,400 schools across Uttarakhand and Jharkhand in partnership with Sampark Foundation. Nearly 5 lakh children and a large number of teachers are benefiting every year from interactive digital tools and foundational learning modules. Smart screens, FLN kits, and hands-on learning materials are helping teachers make complex concepts simple. They are also improving student engagement and strengthening early literacy and numeracy skills. हमने अभी जो उत्तराखंड में जो हमारा प्रोग्राम है, हम संपर्क स्मार्ट शाला प्रोग्राम कर रहे हैं। उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट के 45 ब्लॉक में 2700 प्राइमरी स्कूल और 1000 अपर प्राइमरी स्कूलों में संपर्क टीवी प्रोग्राम जो हमारा है, जिसको कि अब संपर्क स्मार्ट शाला प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें स्मार्ट क्लासेस स्थापित की हैं। संपर्क टीवी के आने के बाद बच्चों ने जो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है, तो यही वाली बात है कि इंटरेस्ट उन्हें काफ़ी अच्छा आ रहा है। उनके द्वारा पढ़ाने से जो हमारे लिए भी क्या ईजी हुआ है पढ़ाना, और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। मतलब नई नई चीज़ें उनको सीखने के लिए मिल रही है। दूसरा उसमें जो है ना मस्ती का पिटारा करके, उसके थ्रू बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उसमें एक्टिविटीज़ जो है मस्ती के पिटारे में भी पहेली है, ये सब चीज़ों में बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैम मुझे पोछा मारने वाली बात या वो चौक से सिखाती है, मुझे समझ में नहीं आता, और जब हमें टीवी से सिखाते हैं वीडियो चला के, उसमें हमें थोड़ा समझ में आता है और हम सवाल कर पाते हैं। And when the foundation becomes stronger, young minds begin to dream bigger, leading us to the next chapter of change. Through its scholarship programs and residential coaching support, ONGC is helping young people pursue professional education in engineering and medicine. One of its strongest initiatives is the Super 30 support model, when 7 medical batches and 7 engineering batches across 8 states receive 11 months of free residential coaching. बच्चे इधर क्या है कि हम जब बच्चे इधर आते हैं 30 स्टूडेंट, तो हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। बच्चों का घर का चिंता होता ही है कि पहली बार घर से दूर आ रहे हैं, तो घर को याद भी आ सकता है। जब हम सारी चीज़ें एक साथ इधर ही मनाते हैं, तो उन लोगों का वो होम सिकनेस वाला पार्ट नहीं रहता। और साथ में 2 महीने में एक बार पेरेंट्स बच्चों से मिलने भी आते हैं। उन लोगों को गार्जियन भी मोटिवेट करते हैं। हम गार्जियन से बात करते हैं, बच्चों का फीडबैक देते हैं, उनको क्या चल रहा है, कैसे कर रहा है। More than 400 students have already secured admissions into medical and engineering colleges. In the academic year 2024-25, 93% of engineering aspirants qualified GEE mains and 96% of medical aspirants qualified NEET. मैं एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक फ्यूचर में एक डॉक्टर बनूंगी। मेरे पेरेंट्स ने भी बचपन से ही मेरे ऊपर ये भरोसा रखा था कि मैं बड़ी होकर कुछ फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। मेरे वहाँ पर जो मैं जिस जगह पर रहती थी, वहाँ पर मेरे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं थे, ना कोई प्रॉपर किसी भी स्कूल में टीचर्स नहीं थे, तो मुझे कुछ भी जेईई नीट के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मुझे क्लास 9 या 10 में पता चला कि ऐसा ऐसा होता है, और मुझे मेरे एक भैया से पता चला कि सुपर 30 के बारे में। तो मैंने वैसे ही देखा और एक्सप्लोर करने के बाद मैंने इसका रिटन एग्जामिनेशन दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट होकर यहाँ पर आई। इतना अच्छा इनिशिएटिव प्रोग्राम लेकर के आया है, जो समाज में ऐसे बच्चों जो कोचिंग करने का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर मेडिकल बनने का डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, बट वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए ONGC और CSR स्पॉन्सर कर रही है, जिससे कि उनको इंजीनियरिंग मेडिकल में मदद मिल सके। A growing nation must also protect the natural world that sustains it. ONGC's environmental efforts focus on restoring green cover, supporting climate resilience, and strengthening ecosystems.
Under the campaign Ek Ped Maa Ke Naam, more than 3 lakh trees have been planted in Tamil Nadu and Gujarat, along with an additional 1.3 lakh trees across other states. These saplings are creating new green belts, improving soil health, supporting biodiversity, and involving communities in long-term ecological care. While the environment sustains the land, livelihoods sustain families. In rural and tribal regions, small improvements in income and resources can change the course of generations. In the tribal clusters of Barwani, Madhya Pradesh, ONGC is building economic resilience through a comprehensive rural cluster development project. More than 800 families now benefit from drip irrigation systems, goat farming units, and crop diversification models. As income improves, seasonal migration reduces, and villages become hubs of opportunity. हम लोग जब यहाँ पे आए, महिलाओं से मिले, तो हम लोगों ने उनको एक बार नहीं 2-3 बार समझाया कि तुम गांव में ही रहकर काम करो। हम लोग जो दे रहे हैं उनको उसका उपयोग अच्छे से करेंगे तो आप लोगों को पलायन नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहोगे तो उससे डबल पैसा कमाएंगे। वहाँ पे आप लोगों को कम मिलता है और दिन भर काम करवाते हैं, और यहाँ आप 2 घंटे भी समय देते हो तो उससे भी तुम लोगों के घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, घर भी चलने लग जाएगा। पहले हम खेती बाड़ी सूखी करता था, अभी ये मानसिक विकास वाला आंबा दिया, पौधे लगाया, अभी बीच में फिर हम दूसरी फसल ले रहा बीच में, तो आमदनी हमारे बढ़ती रहे। पहले हमको साहूकार से पैसे भी लेना पड़ता था, उसका ब्याज देना पड़ता था। अभी हम ये काम शुरू किए तब से हमको पैसे किसी के पास लेना नहीं पड़ता, यहीं से काम हो जाता है। बैंक में जमा करे हुए वो निकाल लेते किसी को काम में आए। Together, these stories form a powerful movement, one that spans the country. From hospitals to classrooms, forests to farmlands, ONGC's impact is visible in every corner of the country. Through more than 1,400 CSR projects across 29 states, ONGC has touched over 2.5 crore lives, with an investment of Rs 929 crore dedicated to sustainable development. The commitment to inclusive growth continues to deepen. ONGC has been able to achieve a lot of depth and width in its CSR approach over the years. Depth in terms of reach and impact. Single crore of rupees spent by ONGC under CSR. We are transforming the lives of around 56,000 people in India. That's a big number and it's much above industry average. When we talk of width, we are doing a lot of projects all over the length and breadth of India, having a national character for our projects. We are working with around 500 plus implementing agencies across this great country, length and breadth, covering all the geographies of India. And that thereby we are improving the CSR ecosystem of India gradually and surely. And with every story of progress, a new beginning emerges. From Delhi to Barwani, from Assam to Uttarakhand, ONGC's energy is reaching people in ways that shape their present and strengthen their future. True energy lies not just in power or production. It lies in enabling people to grow, to learn, to live with dignity, and to dream without limits. And this journey of progress has only just begun.